Hello and welcome. You're watching This Is Exclusive with me, Sharpest. And tonight on This Is Exclusive, we bring to you a deep Republic investigation. Are we really rolling out the red carpet for Rohingyas? A question that was asked by the Chief Justice of India. A report now that has been done by my colleague Aishwarya in Hyderabad shows that there are 31 camps in just one city. In fact, it's a pan-India investigation that has been carried out. This is just part one of our investigation, which goes on to indicate that Rohingyas who are basically settled in the heart of Hyderabad do have Aadhaar card as well as various other government ID verification cards. And it seems that there is some sort of a political patronage that has also been given to the Rohingyas. Over the next couple of minutes, we're going to take you through a detailed report coming in from Hyderabad. And the other big story, the joint collaboration between Republic TV and news agency Sputnik, getting you the latest on Russian President Vladimir Putin's visit. All this and much more. But up first, let me take you through the headlines we're tracking at this hour. Republic TV investigation exposes how infiltrators have been living in large numbers in Hyderabad. Infiltrators confess to Republic how over 30,000 infiltrators have been living in Hyderabad across 31 camps. Countdown has begun for Russian President Putin's much anticipated visit to India. Ahead of Putin's visit to India, Kremlin spokesperson confirms about the multiple high-level pacts that are likely to be signed during the visit. Ladies and gentlemen, this is a Republic TV investigation which has now exposed how infiltrators from Bangladesh as well as Myanmar have basically settled in Hyderabad across 31 camps. And not just that, they have essentially confessed that they've come from villages in Myanmar and they had similarly reached India, and that an estimated 30,000 people from Myanmar were staying in local camps, which they described as numbering more than 20. The investigation suggests that many crossed over without any difficulty, highlighting what the report portrays as widespread and organized illegal entry into the country. We're going to take you to some of the big takeaways from this investigation. The very fact that on camera they have now basically admitted that yes, they do have government ID cards, which essentially means that this is the first stepping stone for settlement in India. And not just that, when questioned about whether at all there has been a political patronage or not, there is also a response that has essentially come in from them. And it does not end there. It seems that some Western organizations also have vested interest in these very camps. It turns out that they have put out aid camps at these very places, and this is right the heart of Hyderabad, where my colleague Aishwarya entered and managed to get them on camera. Take a look. देश में हाल बहुत बुरा है, मार दे रहा है, सब जला दिए, कुछ भी नहीं होना, दफा हो जा रहा, कलमा छोड़ो, यहाँ से चली गई, मुसलमान मिशन यहाँ नहीं रहते, मुझे दिख रहा जला दे, जान से मार दिया, हजारों न्यूज़ में देख रहे हैं। तो यहाँ कैसे आए हैं? बस से, ट्रेन से, पैदल, जंगल से, पानी का नदी से, 8 दिन 8 रात लगता है। कितने लोग के साथ आए? अपन कैसा भी नहीं, एक दो करके ऐसे चुपके दो रास्ता पे निकल जाना। आपका फैमिली के साथ आए थे? नहीं, खाले कितने फैमिली मेंबर
मेंबर्स रहते हैं आपके यहाँ पे? होते हैं यहाँ पे बहुत हजारों। नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं यहाँ? मेरा 6 वाइफ और बच्चे। तो आपको यहाँ पे कैसे यार अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को ना कोई लुसन करे ना किसी को डिस्टर्ब करे, अपना मैंने से अपन जी रहा हूँ। अच्छा, ये शॉप आप यहाँ आके रख। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की? कुछ भी सपोर्ट तो नहीं हमें, कुछ तो बुरा नहीं है ना कुछ परेशानी है। पुलिस वाला आ रहा जा रहा पुस्तक करके चले आ रहे, साल में एक बार डे में ले लेता अपन को लोकल सपोर्ट है कुछ पॉलिटिकली? नहीं, लोकल वाला क्या सपोर्ट देता, अपना प्लाट लेके ऐसा किराया देके जुगड़े वाला क्या पड़े। आपका नाम? और कुछ तो परेशानी नहीं। तो लोकली भी आपको कुछ ये नहीं है कि खाना पीना और ये सब? नहीं, वो रमजान में आके कोई बांटता, कोई इसका जकात अगर आए तो बांटता, नहीं तो मिलने वाले को मिले, नहीं मिलने वाले छोड़ गए, किसी का लफड़ा झगड़ा उससे कोई फर्क नहीं। आप ये शॉप कब रखे? ये 2018 आज तो आपका घर ये ही शॉप से चलता है? कितने बच्चे हैं आप? मेरा बच्चे 4 बच्चे। तो हम लोग किधर से? दिल्ली से, एनजीओ से। कौन सा एनजीओ? एमनेस्ट। अगर क्या है अपने की भी एक शर्त है, कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आया अपना ऑफिस है एनजीओ मिनिस्टर का, कोई मिनिस्टर से मिलके अपन से परमिशन लेना, फिर भी मैं परमिशन दे दिया, बस भाई आया बोल के, किसी को डरना नहीं, किसी को लड़ाई झगड़ा करने का नहीं। The other person that we've caught on camera is someone who basically describes for how long he has been in Hyderabad and how he has managed to settle his entire family in the city. Listen. तो आप कहाँ से? हैदराबाद से। हाँ, तो आप यहाँ पे डॉक्टर इन सबको? हाँ, जनरल फिजिशियन हूँ मैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। हाँ। तभी बुखार बॉडी पे, ये लोग को ईटिंग ज़्यादा है। अच्छा। ये लोग कचरा वो कूड़ा सुनते हैं ना, हाँ। ईटिंग ज़्यादा होती है, तो दवाई मेरे पास से लेते। आज दवाई लेते, कल परसों वो कचरा बेच के पैसे देते, पैसे में बहुत दिक्कत है। थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प होना है तो फिर मेडिकल कैंप कराना, एवरी मंथ एक कैंप कराना है इनको। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या नॉर्मली कितने कैंप्स हैं यहाँ पे पूरे? कितने लोग हैं यहाँ पे? 21 कैंप से भरना है। 21 है? अच्छा, 31 बोल रहे थे? 21 थोड़े लोग चले थे बांग्लादेश। अच्छा, ठीक है। 21 में पूरे कितने लोग हैं? मुझे कम से कम 30,000 हो गए। तो सारे आपके पास ही आते हैं? नहीं, मेरे पास थोड़े आते हैं, उधर रोड पे उधर सब जगह जिसका डॉक्टर जब आता है। और इनका मोस्टली क्या प्रॉब्लम होती है? इनको क्या है, कोल्ड फीवर होता है बॉडी पे और ईटिंग ज़्यादा होती है, यही है कम्युनिकेशन। हार्ड वर्क करते हैं, शाम को जब आते हैं तो बहुत इलनेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। Well, for all those who have been questioning as to what action should be taken against infiltrators and why should there be any action against them, one must listen to the fact that it does turn out that this has been done in a very systematic manner. The very fact that they've been living here for several years put together and the fact that they've managed to get their government IDs. The next soundbite that we're going to play out right now will essentially tell you that whether at all there has been any sort of help or not, or how exactly it is being done in a clandestine manner. अच्छा, तो आप कितने छोटे थे जब यहाँ पे आए? तो बहुत छोटा था, 4-5 महीने का। 4-5 महीने। क्यों आपके पेरेंट्स सब कुछ बोले थे क्यों आ गए थे हम यहाँ पे, कैसे आए? कहने वाला नहीं। तो आप तब से अभी आप यही कचरा कुछ करने वाला काम? मैंने 4-5 साल स्कूल जाते हैं? आपको जाना है फिर यहीं पे रहना है आपको? आप लोग यहाँ आके पैदा हुए थे ना? अच्छा, कब से यहाँ पे हुआ? मतलब कितने सालों से अपने पेरेंट्स यहाँ पे आए? 10-12। स्कूल आप लोग जाते हो? कहाँ पे? यहाँ चंद्रकोटा का गवर्नमेंट स्कूल पे जाते हो? तो आप सब लोग जाते हो स्कूल? कौन से क्लास में हो सब लोग? 5th।
आप? सिक्स। अच्छा, तो आपको यहीं रहना है कि वापस जाना है? जा तो जाना है। तो आप सब यहीं पे पैदा हो गए आप? यहाँ आके ही पे? आपको कुछ परेशानी हो क्या बोलो। आपका नाम बताओ, आप यहाँ कहाँ से हो? मैं रोशी के तो इस तरह से काम करता हूँ। काम करो। आप कुछ हिंदी आती है? तो आप हिंदी में बोलिए कि आप कहाँ से हो? इस तरह से काम करता हूँ। ये काम से। अच्छा, ये काम करते हो आप? अच्छा, तो अब कैसे आए, कितना मुश्किल हुआ आपको आने में, कैसे हो रहा आपका भी? मुश्किल नहीं है। काम करना। कब आए थे आप? 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। अच्छा, कैसे आए थे आप यहाँ पे? यहाँ से बांग्लादेश में बस में ट्रेन में है। ट्रेन में, बस में? यहाँ से हैदराबाद में पैदल भी आ गए? पैदल में। आप यहाँ कौन से कैंप पे रहते हो? ये 25 नंबर में। अच्छा, तो आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं? ये फैमिली में 7 आदमी हैं। 7 आदमी। तो बच्चे कितने? 5 बच्चे। 5 बच्चे। आपके वाइफ और आपके 5 बच्चे? अच्छा, तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि लोकल में कुछ एमएलए में सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ एमएलए में सपोर्ट कर रहे हैं आप? बर्मा में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है, इसलिए सब लोग इधर आ गया। फिर बांग्लादेश में है, इधर भी है। कितने फैमिली? 12 साल भी हो रहा, 10 साल भी हो रहा, 8 साल भी हो रहा है। ऐसा लोग सब लोग इधर भी है, उधर भी है। कितने कैंप है यहाँ पे? यहाँ पे आम 9 कैंप होगा। अच्छा, आपका क्या यहाँ पे कैसे मदद मिल रहा है आपको? क्या कुछ भी मदद नहीं है। 9 दिन के पहले एक बार एनसीआर का तरफ राशन मिला, थोड़ा सा चावल, 30 किलो चावल मिला, 10 किलो आटा भी मिला, और कुछ भी नहीं मिलता। तो आप डेली रोजगार क्या रोज करते हैं? आटा छिलता, रोज घर वाला काम पे जाता। आपको कितना मुश्किल हुआ इधर आने में आपको? बहुत मुश्किल ज्यादा हो रहा है। नहीं, आप कैसे आए यहाँ पे? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए? अच्छा, कितने दिन लगेंगे ऐसे? कैसे, कितना मुश्किल से आए थे? 8 दिन लगता। अच्छा, सिर्फ ट्रेन पे? कितने अपने पूरे परिवार के साथ आए थे? पैदल भी चलता 2 दिन, ट्रेन से भी 3 दिन लगता, 8 दिन लगता इधर आए। अच्छा, ये लोकल में कुछ एमएलए वाले हेल्प कर रहे हैं आपके? नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं करता। ठीक है। आप रोज में क्या करते हैं? ये आटा छिलते हैं, दूसरा लोग देता है ना, 15 रुपया में सब लोग चलता। 1 किलो 15 रुपया। अच्छा, 12 साल। कितने ये कैंप नंबर 25 में कितने 25 है। कितने फैमिलीज रहते हैं? 40 फैमिली तो रहता। 40 फैमिलीज रहता है। अच्छा, तो आप कब आए थे और कैसे आए थे इंडिया से? हम लोग 12-14 साल हो गए यहाँ। कैसे आए थे? हम लोग तो बॉर्डर से गाड़ी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के आए। अच्छा, इधर कुछ मुश्किल हो रहा है आपको, मतलब कुछ परेशानी? अभी तो मुश्किल नहीं हो रही, सब सही है, सब बराबर चल रहा है? तो आपको कुछ लोकल एमएलए सबका हेल्प मिल रहा क्या? हाँ, लोकल मेरे को कुछ भी लड़ाई उड़ाई कुछ भी नहीं हो रही। नहीं, कुछ एमएलए का सपोर्ट है? कुछ भी हमारे को सपोर्ट नहीं है। वो लोग आगे पूछ रहे क्या कैसे आपको कैसे खाना पानी मिल रहा है, कैसा पूछ रहे क्या वो लोग? नहीं, सपोर्ट चाहिए तो दे रहे हैं क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं पूछ रहे। हम लोग अपना अपना काम करके खा रहे थे। यहाँ पे मोसी क्या काम करते हैं आप लोग? काम क्या करते हो आप लोग? हम लोग तो स्क्रैप का काम करते हैं। ठीक, There almost 30 families are living here with they're doing several menial works is what they are doing. This is one of the many camps that are in and around Hyderabad. This is, as we can see, this is one of the ginger and garlic business that they are doing. आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाउसन अली। आप कब कहाँ से हो? हिंदी का बात। अच्छा, आपको आता है हिंदी में? हिंदी नहीं आता। हिंदी नहीं आता है। आप कहाँ से हैं?
म्यांमार कब आए थे? आने का मेरा देश में झगड़ा है रवारी है हमारे का आका क्या जान ले आ जा रही है जान लेता है ना विदेश में आ गए। अच्छा, कब कितने साल हो गए यहाँ आके? 30 साल में 2012 में। अच्छा अच्छा। ये यूनिसेफ का हेल्प मिल रहा है आपको? यूनिसेफ वाले आ रहे आके बात कर रहे हैं, यूनिसेफ वाले, एनजीओ वाले कुछ एनजीओ वाले या लोकल एमएलए वाले कुछ आके आपसे बात करके हेल्प कर रहे? को बात हिंदी का ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। Shifting focus now to the big collaboration between Republic TV and Sputnik. Ladies and gentlemen, as Russian President Vladimir Putin's visit to India is expected tomorrow to further bolster mutually beneficial economic cooperation between India and Russia and pave the way for bolstering Indian exports across a range of sectors. Now, ahead of this, a Kremlin spokesperson has essentially spoken to Sputnik, talking about what is high on the agenda for Putin's visit to India. So what are we to really expect on 4th and 5th of December when President Putin is here in India in terms of the governmental agreements that are likely to take place? Now, this is a Sputnik news break getting us details of what's basically expected in the next few days. We have basically got some details of what is expected, and then we'll straight away go across to Sputnik Moscow reporter joining us. First, it's an informal conversation that's likely to take place between President Putin and Prime Minister Modi, and there will be official negotiations. There will be signing of the 10 intergovernmental documents and over 15 commercial agreements. There's a participation in a Russia-India business forum, and thereafter there would be media statements, a visit to the Mahatma Gandhi Memorial, and as far as who exactly would be present, we're being told that accompanying the President to India are 7 ministers, including Defense Minister Belousov and Finance Minister Sulanov, as well as Central Bank Governor. And a large business delegation is also traveling, is what we are being told right now. We'll straight away go across to our Sputnik reporter who's joining us from outside the Kremlin. Bella, thank you very much. You're joining us from outside the Kremlin. Some details that we've been able to pick up with regards to signing the mobility and economic pact. What more details are you picking up? What are we to expect once President Putin lands in New Delhi? Hello, everyone. I'm very glad to see you. And now I want to tell you about the most important topic now is our financial system. It's very important that Sberbank has implemented a system that allow money transfers between two countries in just a few minutes. And the Russian Central Bank will open soon an office in India, and it's very important because this operation can resolve all our financial issues, our financial matters that we have, and to circumvent sanctions, Russia and India have agreed to conduct transactions in our national currencies, Russian rubles and Indian rupees. And this helps to avoid all issues and problems with dollars that we have. That's all, maybe. It's a very important topic nowadays. Well, I'll just request you to stay on with us because we are also getting in some more details with regards to the Chennai-Vladivostok deal that has already been signed and the movement that's essentially going to take place. India and Russia, what we are being told is ahead of
President Putin's visit. We are also picking up details in terms of the Chennai-Vladivostok route, which is basically high on agenda in terms of the transportation of various materials that are likely to take place, and how exactly Chabar would play an important role here. Let me go back to Bella, who's joining us from Sputnik's Moscow office. Bella, with regards to the Chennai-Vladivostok Pact, this was already signed in the past. In terms of the movement, in terms of trade, there is a clear indication that has come in from the Deputy Prime Minister that Russia essentially wants to double up trade right now with India. How exactly does Russia really view this? What are we to really expect on these lines? I think Russia is very interested to help our friend as India. And nowadays, we creating the new area, our financial area, our military affairs relations, and our strategic planning is very important that we creating today. I think so. That's very important. Thank you very much, Bella, for joining us on this broadcast. In fact, over the next 2 days, we would be having Sputnik's reporters from across the globe joining us and giving us insights into what is really expected from the meeting that's going to take place between President Putin and Prime Minister Modi. A joint collaboration with the largest team of reporters on the ground and a collaboration like never before. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. Coming up, trending with my colleague Co-powered by Century